हाँ, ये 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 थोड़ा कम था। हाँ, ये आवाज ज्यादा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये बहुत अच्छे। राधा स्वामी बहुत अच्छे। थैंक यू।
also wish to thank all the sacred for their tireless labor, which made it possible for us to also for the very tasty food that was so lovingly prepared for one. Thank you. We wish you and everyone a very happy New Year. Oh, thank you. We wish you good health. May your grace be over our heads. Thank you. Thank you. Budget is on 67. Say, meri prita purani, ekir parna guru, yare, yare, ekir parna guru, Tumasay, meri prita purani, ekir para guru, yare, yare, ekir para guru, tumasay, darvaje parpada huahun, Advasare kadahuahun, Antiyapyasi darashadikao, Deya karo Prabhupada lagao, Dinabandhu karuna ke sagar, Meri Sudha Kese Visarani, Ekir Pala Guru, Yare, Yare, Ekir Pala Guru, Namaste, Namaste. Tumasay, meri prita purani, ekir pala guru, yare, yare, ekir pala guru, namaste. Kirpa kai sant janatare, Satguru tumane adama upare, Shibari ke jute palakaye, Sabasharana gatkanta lagaye, Tumane sabake sankatakate, Sabaki vida jani, Ekir para guru, yare, yare, ekir para guru, tumase, 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 meri prita purani, ekir para guru, yare, yare, ekir para guru, namaste. Hey Satguru mere sharana tumhari, tumasagara mere mundra tumhari, tumahi mata pita aur brata, mere
puja chakatumaho data ajayye janmo gata ye janma janma ki kahani ekirpala guru yare yare ekirpala guru tumase 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 meri prita purani ekirpala guru yare yare ekirpala guru tumase. Thank you. धन्यवाद. भक्ति महात्म सुन मेरे भाई सब संतन ने किया बखान भक्ति महात्म सुन मेरे भाई सब संतन ने किया बखान ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की बाणी. This is the Bani of Param Sant Sadguru Swamiji Maharaj. स्वामी जी महाराज भक्ति मार्ग के महिमा का बयान किया है. In this Bani, Swamiji Maharaj has talked about the greatness of devotion. ऐसे 3 रास्ते मेन हैं, जैसे ज्ञान, वैराग और भक्ति. There are 3 main paths. One is knowledge, the other is separation, and the third is devotion. कहते हैं कि भक्ति, संतों ने भक्ति अपनाया और भक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना. And saints have chosen devotion as the correct means for getting salvation. ज्ञान का मतलब वेद शास्त्र पुराण का पठन करना, वाद विवाद करते घूमना, लेकिन उसमें साधन नहीं, कुछ नहीं. So, in the first path of knowledge, people read all the scriptures and they do a lot of debates, and theoretically they study everything and they have everything by heart. But that is again of no point. कहते हैं कि वो किताबी ज्ञान तो दूसरे को बोल बताते हैं, लेकिन उनका अपना कोई ज्ञान नहीं होता. So those people, they read all the scriptures and others, but they do not have any knowledge of their own. तो कहते हैं दूसरा वैराग्य है, घर मकान त्याग करके जंगल पहाड़ों में जाना, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप करना, भिक्षा मांग के खाना, ये वैराग्य में आता है. The other is the austerities, where one leaves the comfort of homes, goes in the jungles or mountains and does their penances, or goes asking alms from other people and trying to do in the remembrance of God. लेकिन भक्ति कोई ज्ञान वैराग का बात नहीं करता. चाहे आप घर में रहो या जंगल में रहो, दोनों एक ही बात है. आपकी लव परमात्मा के नाम से जुड़ा रहे, और वही सच्ची भक्ति है. In devotion, you do not have to necessarily do any austerities, and it is not driven by knowledge as a base. You can be in the comfort of your homes and do your devotion, or you can be outside.
तो भक्ति में दिखावट नहीं, आडंबर नहीं, पहनावा नहीं, रात दिन उस मालिक के रंग में रंगे रहना, अपने प्रीतम की याद में रहना ही सच्ची भक्ति है। In devotion, there is uh, no place for outward attire or for rituals or for showing off devotion. Devotion is all about being in the remembrance throughout of God Almighty, of Sadguru. तो संतों ने भक्ति के रास्ते को अपनाया है और सब संत इसी भक्ति के रास्ते की महिमा गाई है। So, saints have adopted the path of devotion, and all the saints have sung the praise of devotion. यही मता गुरु मत पहचानो और मते सब झूठ बुलान बिना भक्ति तोते सब मानो तिलका है मीठी की हान। तो वही कहते हैं कि बिना भक्ति के सारा ज्ञान जैसे अनाज के ऊपर का छिलका जिसमें कोई सार नहीं होता है, ऐसे निसार है। So he says that without devotion, eh, all this knowledge and all the information and knowledge about the scriptures and other things is like husk on the grains. Without the grain, it is of no use. तो इसीलिए कहते हैं भक्ति बड़ी ऊंची चीज है, जिसमें हम बाल बच्चे रहते हुए, सारा कारोबार करते हुए भी अपने चित्त को, अपने ख्याल को मालिक के नाम से जोड़ के रख सकते हैं। Devotion is of a very high order, and in doing so, we can be in the comfort of our homes, we can be with our children, but we lift our attention and focus towards our Master and towards God Almighty, and we can go about all our duties in this world. बिना भक्ति तोते सब मानो तिलका है मीठी की हान ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान पत जो निदान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसीलिए भक्ति को दृढ़ करके पकड़ो और अपने अंदर जो बुद्धि, चतुराई और ज्ञान का ये है वो सब छोड़ दो। गुरु जो कहता है उस पे चलना। So he says that you leave all your intellect and other smartness and focus on devotion, focus on what your master tells you to do, and you execute that accordingly. नहीं तो क्या करता है, मन धोखा देता है, वो महात्मा ने ऐसा कहा, ये महात्मा ने ऐसा कहा, वो ग्रंथ ऐसा कहता है, ये ग्रंथ ऐसा कहता है, कहते वो सब कुछ नहीं, जो गुरु कहता है वही सच्चा ग्रंथ है। So he says that in the intellect we keep rationalizing what the scriptures say or what some other books say and what some other teachings are saying and what some other person is saying. Like that, we keep rationalizing and thinking whether it is right or wrong. But what the master says is that when the master is telling you something, you forget about all the other rationalization. Just follow what he is saying, and you will be able to do your devotion properly. तो कहते हैं कि इस तरह से अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे कहते हैं चलेंगे तो गुरु की कृपा से जरूर हमें फायदा तत्काल मिलता है, क्योंकि जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो गुरु की दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है और वो यहाँ भी दुनियादारी में भी हमारी मदद करते, रक्षा करते हैं, और शरीर छोड़ के जाने के समय गुरु ही आते हैं। So, if we follow what the master is telling us and if we follow his teachings and walk on the path that he is suggesting, then immediately his
hand of grace is also upon us, and He also helps us. So we get the help in this life also, and we get help after death also. ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान पत जो निदान भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों नाम वेद है रूप समान तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, चाहे भक्ति कह दो, चाहे इश्क कह दो, चाहे प्रेम कह दो, तीनों एक ही बात है। ये अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग रूप से देखते हैं, लेकिन तीनों एक ही है। So he says that whether you call it devotion, whether you call it love, or whether you call it affection for the master, everything is all of these are the same. They may be addressed differently. बगैर प्रेम के सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकती। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ थोथी भक्ति, माने वो ऊपर ऊपर का भक्ति होता Where there is love, there is devotion. So if there is no love and we are trying to do the devotion, then it is only outwardly devotion that we are trying to do. है। कहते हैं गुरुमुखों ने अपने गुरु से सच्चा प्रेम प्यार किया और उनका हुक्म माना, रात दिन उनकी याद में रहे और उससे उनको बहुत फायदा मिला। All the Guru Mukhs, they have always listened to their masters and followed the instructions of their masters. And that is why they have greatly benefited by, by what their masters have said. हाँ, तो चाहिए कि जो गुरु कहता है उस पर अमल करें, अपना मीन में यानी बुद्धि विचार को त्याग दें, अपने चतुराई को भी दूर कर दें, जो कहता है उस पे चले। So once the master has told us something, we should set aside our intellect and other logic and follow what the master is saying. कहते हैं कि महाराज भाई बाला की कहानी बताते थे। भाई बाला एक किसान था, सिख। कहते हैं कि वो जाट था, खेती का काम करता था। उसके अंदर ये भावना आया कि मैं भी थोड़ा दिन क्यों न गुरु की सेवा में जाऊं। There is this story of Bhai Bala. Bhai Bala was a farmer and he used to work as a farmhand. And he felt that why not for some time I go and do seva at the ashram of the master. तो ये सब विचार करके वो भी हाँ, आया महाराज जी की सेवा में। So after thinking, he came to the ashram of his master. कहते उस समय गुरु गोविंद सिंह जी थे और मुगलों से जगह जगह तकरार बढ़ रही थी। So that time, Guru Gobind Singh Ji was there, and there was a continuous state of war with the Mughals. तो कहते हैं कि वो आकर के महाराज जी के सामने प्रार्थना करता है कि महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं जानवरों की सेवा और खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे मन बुद्धि की तरफ देख के मुझे कोई ऐसी सेवा दे दे। So he came to Guru Gobind Singh Ji and he requested that he be given some seva. He said, I am a farmhand and I can take care of animals, I can take care of cattle and horses. And looking at my level of intellect and my skills, please give me an appropriate seva. तो महाराज ने सोचा अच्छा है, क्योंकि महाराज जी जिस घोड़े पे बैठ के रोज दौड़ा करते थे, कहीं भी जाते थे, वो घोड़े की सेवा दिया। So Guru Gobind Singh Ji gave him the seva of taking care of his horse. So he used to use this horse to go on the wars. So he asked him to take care of that horse. तो वो पहले ही किसान था, उसको रात दिन जानवरों की सेवा करने की आदत थी। फिर उसको रोज स्नान कराता था और उसको साफ करके उसको ब्रश मारता था और चना भिगा के और उसको टाइम टाइम सब खाना देता था।
चारा डालता था। So anyway, this was something that he used to do. He used to take care of animals in his farm, and he did this seva very nicely. He used to bathe the horse and brush it, and periodically, time to time, he would give a good uh, food to that horse. He would give grams soaked in water, and he would take good care of the horse. तो महाराज को कुछ दिन में 15 दिन में घोड़ा और भी तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट नजर आया और साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देता, कहीं भी वो गंदगी किया तुरंत हटाता था। ये उसकी सेवा से खुश होके महाराज जी उससे पूछते हैं कि भाई तुझे कुछ पढ़ा लिखा है, अक्षर का ज्ञान है? बोलता नहीं महाराज। So that way, the horse in a fortnight or so became stronger, and the stable also was very clean. Or any filth would be removed immediately. So the stable and the horse, everything was very nicely kept. And Guru Gobind Singh Ji was pleased with this seva, and he called him once and he asked him that, do you also know how to read and write? तो वो कहता महाराज मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है। तो महाराज को दया आ गई, तो बोले अच्छा मैं रोज कुछ तुक बताऊंगा, माने अक्षर बताऊंगा, उसको तो याद करना। So when he asked him, Bhai Bala told him that no, I am illiterate. I do not know how to read and write. So Guru Gobind Singh Ji told him that okay, every day I will give you a sentence or I'll give you words, and you should memorize those, and that way you will gradually learn to read and write. तो जो 5-6 टूक बता के जाते थे, वो काम करते करते उसको रटन करते करते कहाँ सेवा करता जानवरों का और साफ सफाई का ध्यान देता और वो तुक रटते रहता। जब उसको आ जाता तो दूसरे दिन दूसरा पूछता। So that way he would go to Guru Gobind Singh Ji, and he would give Bhai Bala a sentence or two sentences to memorize and a few words to memorize. And that way, Bhai Bala, throughout his duty, he would keep repeating those words and memorizing them. And once those were properly memorized, he would go for the next few words and next sentence. तो इस तरह से महीना चला और एक दिन जो है मुगल और सिखों में युद्ध जोर पे था और महाराज भी घोड़ा को तैयार करने को बोला। घोड़ा तैयार किया गया। घोड़े पे चढ़ के जाने के समय ये कहीं घास काटने के लिए गया था। उसको पता चला कि महाराज 15 दिन के लिए लड़ाई पे जा रहे हैं। वो भागते भागते आया और आके खड़ा होके कहता महाराज मुझे कुछ तुक तो दे के जाओ। तो गुरु गोविंद सिंह को आश्चर्य हुआ कि कैसा भोला भाला आदमी है, इसको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसे समय में ये तुक मांग रहा है। तो वो देख के बड़े आश्चर्य हो के तो कहते वाह भाई बाला, वक्त न पछाने न पछाने बेला। इतना कह के चले गए हंस के। और उसने क्या सोचा, महाराज ने यही तुक दिया है और वो वही रटन करने लगा, वाह भाई बाला, न पछाने वक्त न पछाने बेला। So once, so this went on for a month or so, and there was there was a fierce war that had broken out, and Guru Gobind Singh Ji had to go to fight that war. So he got his horse ready to go for war, and he got ready. And while he was about to leave, Bhai Bala, who had gone out to cut some grass, he got to know that his master is going to go out for 15 days for fighting this war. So he came running, and he met Guru Gobind Singh Ji at the gate. And he told him that you're going to go for 15 days. So can you give me the next sentence to memorize? So Guru Gobind Singh Ji thought that he's such a simpleton. He doesn't understand the gravity of the situation. I'm going out to fight a war,
and he's asking me to give him a sentence to memorize. So in that he said, "Bhai, va bhai bela na pachane waqt na pachane bela," which means that you are great, Bala. You don't know when to ask what, and you're not aware of the time that you're asking this. So और he thought that this is the line given to him for memorizing. So he started memorizing that line. अब वही रटन करते बैठा, क्योंकि घोड़ा भी नहीं था सेवा के लिए, तो रात दिन वही रटन करते बैठ गया। और इस तरह से रात दिन रटन करने से गुरु के ऊपर भरोसा था, उसकी रूह चढ़ाई करने लगी 10 दिन में, और रूह अंदर गई तो उसकी तीसरी आंख खुल गई, गुरु प्रकट हो गया। अब वो जो बोले वो होने लगा। So he was very innocent and he started memorizing what the master had said. And in these days, he was memorizing and repeating that every day. Throughout the day, he was memorizing and repeating it. And he had a lot of faith in the master also. So as a result, the attention of his soul also started withdrawing, and he came to the 10th door by the repetition of these lines. And soon he came to the 10th door, and everything he started saying started happening exactly as he would say it. और जो कुछ कहता वो सच होता, तो लोगों में उसका प्रचार होने लगा। तो जो पहले के लोग, सेवादार लोग थे, मुखिया लोग, जो जो भी 10-12 लोग थे, वो जलन करने लगे कि महाराज जी के अंदर कोई न्याय नहीं। हम इतने बरस से, उनके दादा के समय से हम सेवा में पड़े हैं, 40-40 साल से, उन्होंने हमारे ऊपर दया नहीं किया। कल परसों आया वो जट, उसके ऊपर दया कर दिया। So news about his spiritual prowess reached uh, around the Sangat, and everyone started talking about it. And the group leaders and the other mukhiyas who were there for quite some time doing seva of their master, they started feeling envious about Bhai Bala, and they felt that there is no justice here. This We have been doing seva for so many years. We have been coming here doing seva, and yet this farmer, he comes from nowhere, and all of a sudden he has all this spiritual upliftment, and there is no justice. तो महाराज ने उसके ऊपर दया किया, हमारे ऊपर किया नहीं, और ऐसा जलन और राग द्वेष फैलने लगा। So that way they started feeling jealous and envious about him, and they felt that the master has showered grace upon this farmer, but on us he has not done so. तो बाद में सब लोगों ने मीटिंग लिया कि चलो महाराज आते ही पूछेंगे कि महाराज आपके दरबार में न्याय नहीं है। So they all gathered together, had a meeting, and they decided that they will question the master and ask him ask him about Bala, and question him whether, I mean, as to the fact that there is no justice in his court. तो बाद में जब 15-16 दिन के बाद महाराज लौट के आए, तब ये लोग, सब लोग गए शाम को, और जाके नमस्कार करके बैठ के कहते हैं, महाराज आपके दरबार में न्याय नहीं है। हम लोग इतने साल से आपके पिछले पूर्वजों के टाइम से सेवा कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर दया नहीं किया। कल परसों आया वो जट, उसके ऊपर दया कर दिया, उसकी वो जो कहता है होने लगा। So they all, after about 15 days, when the master returned, all of them gathered, and they sat before the master, and then they asked him, and they told him that, sir, we have been doing seva in the ashram, and we have been doing seva not only uh, to you, we have been doing seva to your forefathers also, to and it's been generations that we have been doing seva, but yet you choose to extend your grace upon this farmer who has just come,
and not upon us. तो महाराज समझ गए कुछ गड़बड़ है, तो बोले मैं तो उसको नाम भी नहीं दिया है, तो आप कुछ क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो बोले अच्छा बाला से पूछो। तो बाला को बुलाए, तो बोले क्यों भाई बाला, तू क्या रटन करता है? वाह भाई बाला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। अरे ये तो कोई उपदेश नाम नहीं है, तो उसको तो फायदा मिला था विश्वास करके। वो बोलता महाराज आपके मुंह से जो निकला वही मंत्र है। So, Guru Gobind Singh understood that there is something amiss here. So he asked them as to the reason, and they told him about Bala. So he called Bala. He said, "Let's ask him because I have not even initiated him. So let him come and explain what is happening." So when they called Bala, the master asked him, "What have you been repeating? What have you been practicing?" So he repeated. He said that I have been repeating the words you gave me. That "Va bhai bela na pachane vakat na pachane bela." So he was he said that I've this is not initiation. I've not even given you any mantra, or I've not given you any words for repetition also. So Bala said that whatever you are saying is like a mantra to me. So I follow it like a mantra. हाँ, उसको फायदा मिल गया। तो बाद में तो महाराज समझ गए, ओहो ये लोग के अंदर अभाव आ गया है, तो इनको कुछ भी बताएंगे तो अभी ये गुस्से में है, मानेंगे नहीं, तो इनको कुछ तरीका से समझाना पड़ेगा। तो उनको कहा अच्छा आप लोग कल आओ, तो आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। So then the master felt that okay, this is the matter, and he felt that all these people are quite annoyed and disturbed right now. So whatever I explain to them, they will not accept it. So he told them all to come the following day. He said, "You come, I will give you the answer tomorrow. So all of you come tomorrow." तो महाराज ने सब शाम को सौंफ, काली मिर्च, भांग और गुड़, भांग में क्या क्या सामान डालते हैं, ठंडी उंडी सब मंगाया, और मंगा के जो है कि रात को भिगा के रख दिया भांग को। और सवेरे दो आदमी पहलवान को बैठाया पीसने के लिए। वो बड़ा पत्थर पे पीसने लगे, क्योंकि बड़ा हंडा बनाना था। तो उसमें गुड़ मिला के रखा था, उसमें भांग जो है मिला दिया, और उसमें थोड़ा दूध डाल दिया, और डाल के मिक्स करके इनको एक एक लीटर का लोटा था, बड़ा बड़ा, एक एक लीटर का इनको लोटा भर भर के दिया, एक को 20 लोग को। बोला देखो इसको मुंह में लेना, लेकिन थूक देना, एक गले के नीचे नहीं जाना। बोला अच्छा महाराज। तो सब लोगों ने ऐसे ही किया, मुंह में लेना थूक देना, मुंह में लेना थूक देना, ऐसा करके पूरा हंडा खाली हो गया हाँ, भांग का। तो महाराज कहते क्यों, कुछ नशा आया? कहते महाराज जब नीचे उतरा होता तब तो नशा आता, आपने ऊपर से ठोक दो बोला, हम ठोक दिया। तो कहते यही हालत है आप लोगों की। तो नाम आप लोगों ने लिया, लेकिन वो गले के नीचे नहीं उतरा। वो ऊपर ही रह गया है। तो उसका नशा कैसे आपको आएगा, जबकि मैंने उसको नाम नहीं दिया। मैंने उसको ऐसे ही बोल के हंसते हुए गया, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। और वो उसी को मंत्र मान के रात दिन जपते बैठा है, तो उसके अंदर कितना विश्वास है। वो विश्वास आपके अंदर है? सब चुप हो गए। तो कहते हैं कि फिर कैसे फायदा मिलेगा। तो ये हालत होती है, इसलिए कहते हैं कि जो गुरु कहता है वो सच है, उस पे अमल करना ही भक्ति है। So Guru Gobind Sahib called everyone the following day, and in the evening he called for all the various almonds and cashew and bhang seeds and milk
jaggery, and he soaked all those seeds in the night. And in the morning, he called two strong people, sevadars, and he asked them to grind all those seeds. Bhang seeds, if you grind more, they are more intoxicating. So the more finely ground bhang is more intoxicating. So he asked them to grind them very well, and so everything was prepared. So he took uh, a big vessel of, and then he put milk, and then thandai, and then all these almonds and other nuts and bhang, and he prepared a huge vessel full of bhang. And then he called all those 20 people who had gathered the earlier day, and he gave them vessels of 1 liter each, and he filled that with bhang. And he said, okay, now all of you have 1 liter of bhang with you. So now you have to drink this, but make sure it doesn't go below your throat. So you just rinse your mouth with it and throw it. Make sure that not a single drop should go inside your throat. So they all did as they had been told by the master. They all quickly drank that liter of bhang, and they rinsed their mouth and they spat it out. After all were done, he asked them, okay, so now have you all got well intoxicated with the bhang? So they all said that, but you told us not to drink it, you told us to spit it out. He said, exactly. This is what you do with the naam. When I give you naam, none of you are taking it below your throat. You're just gargling and throwing it out. So you see, Bala, he has taken a simple sentence. That too, I said it jokingly, but he took that sentence, he memorized it, internalized it, and see where he is. That is because he had faith in the master. He didn't question what was being told to him. He simply memorized it and did it. Now, do you all? Does any one of you have that much faith in the master like he has? And that is what happens to all of us. We are not able to develop that kind of faith and follow the instructions of the master and listen to what he has to say. तो सब लोग चुप हो गए, उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया कि नाम तो लिया लेकिन कभी जपा नहीं, तो उसका नशा कैसे चढ़े। अगर हमने रात दिन जपा होता उसके जैसा तो जरूर फायदा मिलता था, लेकिन ये ऊपर ऊपर नाम को बंद करके रख दिया है, तो उसका जो फायदा कैसे मालूम हो। So that is, so everyone became quiet. All those followers understood. They got the lesson, and that is what happens. We take the initiation, but we do not internalize it. We do not do the repetitions. We do not practice it enough. It is just uh, given to us, and we outwardly rinse that and gargle that and spit it out. भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों नाम वेद रूप समान भक्ति भावय गुरुमत जानो और मते सब मन मत ठान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो भक्ति का रास्ता है वही गुरुमत सिद्धांत है, और जो रास्ते हैं वो मनमत है, मन के दायरे में किए जाते हैं, और ये भक्ति है वो गुरु के हुक्म पे दायरे में किया जाता है, तब वो भक्ति फलित होती है। So he says that devotion is the path for Gurumukhs, is the path in Gurumat. All the other means which are being followed, that is for Manmat, that is for the mind, and only the mind grows with that. But whatever devotion we do under the instructions of the master, in with faith in the master, that is what fructifies. प्रेम रूप तम परमात्म भक्ति रूप सत नाम बखान
भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति जो है प्रेम का रास्ता है और गुरु भी प्रेम रूप होता है, परमात्मा भी भक्ति रूप है। तो अगर प्रेम से भरी हुई भक्ति की जाए तो जरूर सफलता मिलती है। अगर प्रेम के बगैर कोई भक्ति थोथी भक्ति होती है, उससे उतना फायदा नहीं मिल पाता। So he says that we should do our devotion with love and affection. Devotion is a form of love, and God Almighty is also a form of love. So if we do this devotion with love, only then we are able to get success. तो इसीलिए सब संतों ने भक्ति की महिमा गाई है। भक्ति श्रेष्ठ है और जो भी कुछ है वो मन के दायरे में होता है, जैसे जप होवे, तप होवे, प्राणायाम, अष्टांग योग, लोग मन के दायरे में ही करते हैं और इसीलिए वो मन बस में नहीं आता। So therefore all the saints have sung the praise of devotion, because everything else that we do, whether it is pranayams, ashtang yoga, or any other austerities or penances, all of that is under the realm of the mind, and with that we do not get the peace of mind. We are not able to control the mind with those practices. और पूजा पाठ ये भी मन का ही खेल होता है। जो जो मन में संकल्प आता है वो वैसे वैसे करते जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई गुरु नहीं होता। Even the rituals we do, the pujas we do, or the parts or what we do, the reading of the scriptures, this is also according to the thoughts of the mind. As the mind gives thoughts, we follow that and do the rituals accordingly. भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यो ही मान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो आपका आत्मा का भी प्रेम रूप है। सब जीवों में जो आत्मा है सब एक ही रूप है, सब प्रेम का ही रूप है। और वो प्रेम जब तक प्रकट नहीं होता है सदगुरु के चरणों में या तो नाम के साथ, तब तक हमारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कही जाती। The soul is also a form of love. All the souls in everybody, they are all having love. All of them have love as an essence of all the souls. So when we lovingly do the meditations, also when we have that love and we get connected to the sound current, we get connected and manifest the holy form of the master. That is done when we have that kind of love coming from within us. कहते हैं सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति सेवरी के अंदर होने से राम सेवरी के कुटिया में गए और जो ऋषि मुनि बड़े बड़े लोग खड़े थे, जो जो कि 8,000, 7,000, 6,000 बरस से तपस्या में लगे थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार था। मैं बड़ा अहंकार था। तो इसीलिए भक्ति जहाँ है वो राम सीधा सेवरी की झोपड़ी में गए और जूठे बेर खाया। तो ये भक्ति की ही महिमा है। Shabri had a lot of love and affection for Ram, and she was devoted to Ram. It is only because of her love and her devotion that Ram walked straight into her hut and did not stop by all the other rishis and munis who had spent thousands of years. Some had spent 6,000 years, 7,000 years, 10,000 years. They had developed an ego about how long they had done their penance and waited for Ram. But he did not go there. Instead, the love and devotion of Shabri pulled him to her hut. तो वहाँ जात पात का सवाल नहीं है,
प्रेम का सवाल, प्रेम से भरी हुई भक्ति का सवाल है। ये ऋषि मुनि सब बड़े जात के थे, लेकिन अहंकार था, भक्ति नहीं था। और शबरी के अंदर भक्ति थी, इसलिए वहां गए। तो और इसी तरह से कहते हैं, तजा सकल पकवान खाया दासी सुत भाजी। कहते हैं दुर्योधन ने आमंत्रण दिया कृष्ण को, कृष्ण गए, लेकिन दुर्योधन के घर जाने के बजाय विदुर के घर गए, और वहां जाके उनका बर्तन में जो सटा माने साग जल गया था, वो खा के कहते पेट भर गया। So, so it is not about the caste or the practice that one has done. It is devotion is not about whether one is of a higher caste or a lower caste. Anyone who has love and affection, love and devotion, uh, God Almighty is drawn to that love and devotion. In case of Krishna also, he refused to go to Duryodhan, who had a large luncheon set out for him. Instead, he chose to eat the scraps of the vessels, the cooked vegetable which was stuck on the vessel. He ate that and he was content with that, because there was devotion and love uh, there in that in with the wife of Vidur. और कहते हैं किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपुच बिन घंट न बाजा। कहते हैं कि जब महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो वो खत्म होने का क्या था, आकाश में घंटा बजेगा। सब खाए, कृष्ण भी खाए, और आकाश में घंटा नहीं बजा। कि जब तक सुपुच महर्षि, वो भंगी थे, द्वापर युग में कबीर के शिष्य थे, जब तक वो आके खाना नहीं खाए तब तक घंटा नहीं बजा। तो भक्ति की महिमा। So even in Mahabharat, at the end of Mahabharat, when Yudhishthir was asked to do a yajna and a Ashwamedh yajna, and he invited everybody for a luncheon, and even Krishna ate, and everybody, all the rishis, munis, all the kings, everybody ate there. And after everyone was content, the bell was to ring in the skies, but it did not ring. And eventually they had to call a sweeper, Supuch. हाँ, And only when Supuch ate food, the bell in the sky rang. And Supuch was a sweeper, and he was a initiate of Kabir in that yuga. एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद कहीं लहर समान, कहीं सिंध सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत कहान। तो वही आप स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एक जगह वही ताकत बिंदु के रूप में है, एक जगह लहर के रूप में है, और एक जगह समुद्र के रूप में है, लेकिन तीनों एक ही है। So all the three are the same forms of love. They are only in a different. The soul, the master, Nam and Sadguru and God Almighty, all are manifestations of love. Only that they are in different forms. Somewhere it is a drop of the ocean, somewhere it is a wave of the ocean, and somewhere it is the ocean. So they are only different forms. तो कहते हैं कि वही ताकत ब्रह्म पार ब्रह्म ब्रह्म और इससे नीचे आके पिंड में यहाँ पे बैठी हुई आत्मा, और वो एक बिंदु के रूप में है। जब भजन करके यही आत्मा ऊपर चढ़ाई करेगी, पार ब्रह्म में जाएगी, तो लहर के समान, नदी के समान हो जाती है, और नदी समुद्र से जुड़ा होता है। और फिर वही सतलोक सचखंड में जाके सतपुरुष का दर्शन करके वही समुद्र के समान हो जाती है। So that sound current which has come down from the Par Brahm into the Brahm and
is resonating at the eye center, and the soul also sits there. The soul is a drop of that ocean of God Almighty, and it is in the form of a drop. When we manifest that sound current, and the soul goes and merges with that sound current and goes to Par Brahm, it takes the form of a river, and that river is connected to the ocean of God Almighty. And when that same river meets God Almighty, meets the ocean, it becomes the form of ocean. So it is that soul, same soul, which transforms from a drop to a river to a ocean. तो कहते हैं कि शरीर में कैद हो जाने से उसे जीवात्मा आत्मा कहते हैं, और जो ऊपर जाके परमात्मा से मिला उसको संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, और जो परमात्मा है उसको समुद्र कहते हैं। तो कहते हैं कि ये तीनों एक ही चीज है। So that same energy, that same power, the soul, when it is encased in this body, it is called a jiva. And when it merges with the Sadguru and goes back, it becomes like a river. Sadguru, when it is Sadguru is like a wave from the ocean, and when they merge back with God Almighty, eh, it becomes an ocean. कहीं चा प्रबल होए बेटी, कहीं हुई माया बलवान, एक ठिकाने माया तोड़ी, निंद प्रताप शुद्ध हुई आन। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक जगह पे वो जब सतलोक से आई तो निर्मल थी, जैसे जैसे मंडल बाई मंडल नीचे आती गई, उसके ऊपर शरीर के पर्दे चढ़ते गए, और आके पिंड में दोनों आंखों के बीच में आत्मा और मन बैठ गए। तो कहते हैं यहाँ आके आत्मा मन के दायरे में कर्म करके मलिन हो गया, माया के अंदर कैद हो गया, अब ये मलिन हो चुका है। फिर गुरु के कृपा से जब ये साधन करेगा और रात दिन कर्म को काट के ऊपर जाएगा, तो वो वहां माया कम हो जाता है। पार ब्रह्म में खाली 10 पैसे भाग माया रहता है, और 90% भाग माया खत्म हो जाता है, और कर्म पूरा खत्म हो जाता है। खाली कहते कुछ नहीं, प्रारब्ध जिसके ऊपर शरीर है वो एक ही रहता है, संचित भी जाता है, क्रियामान कर्म भी जाता है। और वही जब सतलोक सचखंड में जाता है तो एकदम निर्मल हो जाता है आत्मा। परमात्मा निर्मल है, उसका दर्शन करके आत्मा भी निर्मल हो जाता है, और हर एक आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश बाहर आने लगता है। That soul, when it came down from God Almighty and it came down to the lower planes, and below the Brahm, it started getting encased in different bodies, the causal, astral, and the physical body. Finally, it got encased in this physical body, and it resides at the eye center. The mind and the soul both are at the eye center, and by doing the karmas along with the mind, it is all covered by all the filth of the karmas, and all that luminance has gone, and it is now fully covered by Maya. So it has lost its identity and it is fully covered. With the grace of the Master, when uh, effort is made and the cleansing is done, then it will manifest the holy form of the Master and go back to God Almighty. So when it does that, it again gets rid of all the outward coverings and goes back and gets the luminance of 16 suns when it goes back and merges with God Almighty. Here now it is completely encased in this body, and Maya is it is completely subdued by Maya, which is almost 90 to 100%. But in Par Brahm, when it crosses the three realms or the underpinned Brahmand, then Maya, the effect of Maya reduces substantially. It is less than 90%.
So only about 5 to 10% is the effect of Maya there, because only the pralabdha karmas are continued, because this body uh, is made on those fate karmas. So it only those fate karmas remain. Even the sanchit is removed, the kriyaman, everything else is uh, redeemed. Only the pralabdha stays. So the effect of Maya is very, very minimal there. And when it goes to God Almighty, there is absolutely no effect. And it has the radiance of 16 suns there. अभी उदाहरण दे के समझाते हैं कि जैसे 1000 वोल्ट्स का बल्ब है, 1000। अभी उसके ऊपर एक चादर पे तान दिया तो बाहर उजाला कम हो जाता है। कोई दूसरा चादर और लपेट दिया तो और भी कम हो जाता, हल्का सा आता है। तीसरा चादर कोई लपेट दे तो पूरा बाहर अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंदर 1000 वोल्ट्स का बल्ब है। यही हालत हमारी आत्मा की हो गई है। जैसे ये पार ब्रह्म में आई, कारण शरीर का चादर कारण शरीर में आई, पर्दे में, वहां से सहदल कमल में आई, सूक्ष्म शरीर में लग गया। अब स्थूल शरीर में आके यहाँ कैद हो गई, 3 पर्दा कवर चढ़ गया। अब इसलिए इसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। अब यही साधन करके जब ऊपर जाएगी तो इसका प्रकाश बाहर आने लगता है, अपने आत्मा का ही, और आत्मा का ही आवाज बाहर आता है, प्रकाश और आवाज, जिसको हम सुनते हैं। So the example that is given to understand how uh, what the position of the soul is, one can imagine a 1,000 volt bulb. So it is very bright, and if someone covers it with one blanket, then that light reduces substantially, and then again someone covers with one more, that light will further diminish, and finally when the third blanket is cast upon it, then it loses the light completely. Like that, when the soul has come, it has the brightness of 12 suns, but it comes and it first gets covered by the causal body, then by the astral body, and then by the physical body. And now that luminance of the soul is completely lost. When it starts going back, it starts realizing itself and it starts going back with the master, then it starts emanating more and more luminance from itself, and it starts giving sound. The sound that we hear is from the soul. The sound and the light both come out from the soul. So as it progressively moves upward, it eventually loses all these three coverings and comes back into its essence of light and sound at Parbrahm. तोत पोत में माया नाई, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान। वह भंडार प्रेम का भारी, क्या कहा दिन अंत दिखान। तो वही कहते हैं, जब तक आत्मा स्थूल शरीर में कैद है तो माया के अंदर है और इसका कुछ नहीं चलता है, क्योंकि इसको अपने आप की खबर ही नहीं। आज किसी को भी पूछो तुम कौन हो, तो शरीर का नाम बताते हैं। कोई कहता मैं आत्मा हूँ, अपने आप को भूल ही गए, अपने पिता को भी भूल गए, अपना घर भूल गए, दुनिया को अपना देश समझ लिया, शरीर को अपना रूप समझ लिया, और मन के दायरे में कर्म करके मलिन हो गया। So he says that now the soul, when it is encased in this physical body, it is completely deluded by Maya. It is completely under the influence of Maya. So it has forgotten about itself altogether. If someone asks you as to who you are, then we never think or talk in terms of the soul. We always refer to the body, because we have completely forgotten our true home and our true father. तो कहते हैं जब गुरु के कृपा से साधन करके ऊपर जाती पार ब्रह्म में, तो वहाँ माया का प्रभाव नहीं है, खाली थोड़ा ही है, और सतलोक सचखंड में वहाँ पूरा माया नहीं। तो कहते वो निर्मल ही निर्मल है,
और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। So when that soul uh, goes above, goes to the higher planes, it goes to Prabram, the effect of Maya reduces substantially. And thereafter, when it goes to Sachkhand, the effect is altogether removed. So it comes into its very own essence of light and sound. बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान, प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा, ग्रहण करो यह अमृत खान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये रहस्य संतों के अलावा और किसी को पता नहीं है। कहते हैं कि प्रेम और भक्ति की इतनी महिमा है, तो कहते हैं कि अमृत का खान है, इसको ग्रहण करो, इससे फायदा मिलेगा। So Tulsi Sahib says that this स्वामी secret, this reality, Swamiji Maharaj says that this reality, this secret is not known to others, it is only known to saints. And they really know that this love and devotion is like a treasure of nectar. और यही सच्चा भक्ति का रास्ता है। सब संत महात्मा इसी प्रेम भरी भक्ति के जरिए करके एक पर गुरु को सब कुछ मान के और वो उस मालिक के धाम में पहुंचे हैं। और जो भी ऐसा इस रास्ते पे चलेगा उसको जरूर सफलता मिलेगी। So he says that the masters have believed in devotion, in love, and they have believed on what their masters have said. And by doing so, they have gone back to God Almighty. So anyone who follows their instructions and does this with love and devotion, they will also be able to go and manifest God Almighty. गाते पहले करो भक्ति गुरु, नीचे पाओ नाम निशान, आरत कर कर गुरु रिजाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान। तो इसीलिए कहते हैं पहले गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति का मतलब गुरु को अंदर प्रकट करना। जब तक गुरु अंदर नहीं प्रकट होंगे हमारी भक्ति कभी पूरी नहीं, माने कि हम अंदर जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए गुरु भक्ति में क्या है, रोज रोज सत्संग सुनना, रोज रोज भजन सुमरन करना, समय मिले तो सेवा करना। इन तीनों से हमारे कर्म करते जाते हैं और एक दिन हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होता है। तो कहते हैं पहले गुरु को अंदर प्रकट करना, 10वें दरवाजे में गुरु को प्रकट करना, और उसके बाद में और सब, क्योंकि गुरु ही ऊपर लेके जाएगा। गुरु के बगैर अंदर में आप एक कदम भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए पहले गुरु की सेवा, गुरु की, फिर नाम भक्ति। जब ऊपर के मंडल में आपको रखेंगे वहां नाम की भक्ति, और आगे जो है सतलोक सचखंड मुक्त उद्धार परमात्मा का शरण में पहुंच जाती है। So he says that the first step on this path of love and devotion is Guru Bhakti. The first step is to manifest. What is Guru Bhakti? It is to manifest the radiant form of the Master, and that is the true first step on this path of devotion. Because if we do not do this first step, we do not manifest the form of the Master, then it is impossible to go further up, because it is only with the grace of the Master and his handholding that we can go further up. And how do we do this Guru Bhakti? We do this by by listening to Satsang every day, by doing our bhajan simran every day, and whenever we get the opportunity, we do selfless service, we do seva. So by doing these three things, we are continuously cutting down our burden of karmas, and at some point we will be able to go within.
And when we go within, we will be able to manifest his radiant form inside. So once we have manifested his radiant form, we can say that our Guru Bhakti is accomplished. We have been able to successfully do our Guru Bhakti. And after that, there is Nam Bhakti, because at the higher level, with the grace of the Master, he will ask us to, he will manifest the Nam, he will manifest the holy sound current, and then we will do the devotion of the sound current. After that, it is the door of salvation, and from there, it is uh, Satpurush, it is Satlok that we will eventually go to with his help. आरत कर कर गुरु रिजाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान। राधा स्वामी कहत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। कल का बाबा जी हाँ, कल का बताओ। साढ़े अपना सत्संग 10:30 का रैंक रखेंगे कि 10:30 कि 10? सत्संग कल ध्यान 1 घंटा है ना? हाँ, 7 से 8, हाँ, तो 9:30 से सत्संग। 9:30 से। So tomorrow, जल्दी आएगा। बाथरूम हो गया। 9:30 पर। 9:30 पर, ठीक। So tomorrow's program will be like this. Morning there will be 1 hour of meditation from 7 to 8, and after that there will be light snacks. So by 8:30, let's finish the snacks, get fresh, and 9:30 we 9:50 30 is the Bhandara Satsang. After the Bhandara Satsang, there will be the Bhandara lunch, and following that, we will have darshan of Babaji. With that, it will be the end of the program. कल 7 से 8 ध्यान होगा, और 8:30 को लाइट नाश्ता होएगा, और 9:30 को भंडारा सत्संग रहेगा। उसके बाद भंडारा का लंच होगा, और इस पहले प्रोग्राम की समाप्ति होगी। तो सुगर प्रसाद आ जाएगा। हाँ, शाम को। हाँ, तो सुगर का प्रसाद दर्शन के टाइम पे ना। हाँ,